everyone, this is Prachi Jetli. I am here at one of the super sites at 191 North Clark for the Chicago Board of Election. The early voting for all 50 wards has started for the city of Chicago downtown presidential primary elections that are going to happen on March 19th. Today, let's hear from the South Asian community representative Kimiko Mehta about what are the provisions available for the bilingual voters. Let's also hear from the chairwoman Marisol Hernandez. 50 wards are going to have the touchscreen ballots with 12 languages that are going to assist the bilingual voters. And out of 50 wards, 25 wards are going to have bilingual judges available on site to assist the voters in the languages of their preference. My name is Marisol Hernandez. I'm the chairwoman of the Chicago Board of Election Commissioners. I am happy to announce the start of early voting today in all 50 wards for the city of Chicago for the March 19th presidential primary election. Early voting will run through the next 2 weeks through March 18th. The 50 ward early voting sites will be open weekdays from 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays from 9 to 5, and Sundays from 10 to 4. All these early voting sites, including this downtown super site, will also be open on Election Day, March 19th, from 6 a.m. to 7 p.m. A voter living in Chicago may choose to vote at any early voting site that's convenient for them, no matter where they live in the city. In addition, all of our early voting sites at this time are fully compliant with the Americans with Disabilities Act. For all those of Chicago eligible voters who are not yet registered to vote or who've had an address or name change, we also provide same-day voter registration services at any one of our early voting sites. That means that you may register for the first time, you could file an address change or a name change, and then cast your ballot during that same visit. Just bring with you 2 forms of ID, one of which contains your name and address. Whether it's the site closest to your home or to your job, where you do shopping, where you exercise, simply come to one of the 50 plus locations and check in with board staff, and you can vote on the spot. My name is Kimiko Mehta. I am the South Asian Community Service Representative for the Chicago Board of Elections. We are extremely proud today to celebrate the start of early voting in all 50 wards of Chicago. I would like to inform all of you that all early voting sites have touchscreen voting machines and audio ballots in 12 languages: English, Spanish, Chinese, Hindi, Korean, Tagalog, Polish, Gujarati, Urdu, Ukrainian, Arabic, and Russian. There are several early voting sites across the city where a South Asian language voting official can assist you, including right here at the super site at 191 North Clark Street. We have Jogita Singh and Saima Amjad here as our Hindi, Urdu, and Punjabi South Asian voting officials. We also have bilingual South Asian voting officials at our 33rd Ward site at the American Indian Center, the 39th Ward site at the North Park Village Administration Building at 5801 North Pulaski Road, the 40th Ward site at the Budlong Woods Library at 5630 North Lincoln Avenue, the 48th Ward site at the Edgewater Library, the 49th Ward site at Willie B. White Park at 1610 West Howard Street, and at the 50th Ward site at the Northwest Library at 6800 North Western Avenue. These locations will be marked with signages, as you can see here, alerting voters to a bilingual voting official present on the site. A sincere request to all South Asian American citizens of the United States to please go to any of our early voting sites
to vote for the presidential primary elections. These early voting sites, for your information, become voting centers on the election day and should be used to exercise your democratic right to vote. Thank you. I will be reading this message now in Hindi. नमस्कार जी, मैं किमिको मेहता शिकागो चुनाव आयुक्त परिषद में दक्षिण एशियाई सामुदायिक सेवा की प्रतिनिधि हूँ। आज बेहद गर्व के साथ ये सूचित करना चाहूँगी कि हम शिकागो के सभी 50 वार्डों में समय पूर्व मतदान की शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सभी समय पूर्व मतदान स्थलों में 12 भाषाओं में टच स्क्रीन वोटिंग मशीनें और ऑडियो मतपत्र हैं और ये भाषाएं हैं अंग्रेज़ी, स्पेनिश, चीनी, हिंदी, कोरियन, टैगलॉग, पोलिश, गुजराती, उर्दू, यूक्रेनी, अरबी और रूसी। शहर के ये सभी समय पूर्व मतदान स्थल जहां दक्षिण एशियाई भाषा के मतदान अधिकारी आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं, उनमें शामिल है 191 नॉर्थ क्लार्क स्ट्रीट, जो हमारा सुपर साइट है। यहाँ हमारे पास दक्षिण एशियाई मतदान अधिकारियों के रूप में जोगिता सिंह और साइमा अमजद हैं, जो हिंदी, उर्दू या पंजाबी में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा वार्ड 33 का समय पूर्व मतदान स्थल, जो 3401 वेस्ट एंजली स्ट्रीट पर है, अमेरिकन इंडियन सेंटर में स्थापित है। वार्ड 39, जो 5801 नॉर्थ पुलास्की रोड पर नॉर्थ पार्क विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में है। वार्ड 40, जो 5630 नॉर्थ लिंकन एवेन्यू पर बडलॉन्ग वुड्स लाइब्रेरी में है। वार्ड 48, जो कि 6000 नॉर्थ ब्रॉडवे स्ट्रीट पर एज वाटर लाइब्रेरी में है। वार्ड 49, जो 1610 वेस्ट हार्वर्ड स्ट्रीट पर विली बी वाइट पार्क में है। और वार्ड 50, जो कि 6800 नॉर्थ वेस्टर्न एवेन्यू पर नॉर्थ टाउन लाइब्रेरी में है। इन सभी समय पूर्व मतदान स्थलों पर ये अंकित किया जाएगा कि मतदाता वहां मौजूद द्विभाषी दक्षिण एशियाई मतदान अधिकारियों की मदद ले सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी दक्षिण एशियाई अमेरिकी नागरिकों से अनुरोध है, गुजारिश है कि कृपया राष्ट्रपति प्राथमिक चुनावों में मतदान करने के लिए हमारे किसी भी समय पूर्व मतदान स्थल पर जाएं, ज़रूर जाएं। आपकी जानकारी के लिए ये प्रारंभिक मतदान स्थल चुनाव के दिन मतदान केंद्र बन जाते हैं और आप 19 मार्च को अपने क्षेत्र के अलावा इन केंद्रों में भी मतदान कर सकते हैं। धन्यवाद।